आज जेका आहे पढ़ाई से पंक्चुएशन जो हिकिड़ो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पहलो है quotation mark quotation mark के पाण 69 सां याद करे सघंदा. If we want to remember the quotation mark, we will remember the number of 69. So 69 नंबर याद करना थी तो डबल ब्रिटिश यूज करना है. ठीक है. Where the quotation mark are used? The quotation mark क्या है ना? Speech mark इनके बीच में हुआ है. What are the other names of the quotation mark? The other names are speech mark and inverted commas. Inverted commas. So where are they used? They are used to enclosed. They are used to enclosed or set up the exact word. The exact words. And suppose मुझे मथे में सूर है. The Sajni says, सिद्धि में भी जेकरे पाठ सुन उर्दू में, I have headache. I have headache. आने तो जिसो दमा, ये सजनी जा एग्जैक्ट वर्ड है. बस सजनी चयो तो मुझे मथे में सूर है. जो सजनी चयती मुझे मथे में सूर है. ये सजनी जा एग्जैक्ट वर्ड है जेकी पाठ पास है. इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना सी. तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने जला पाण छा करना सी. इतना का स्टार्ट करना सी जेको 6 है. 6 टाइप है. सिंगल क्यू या डबल क्यू डजंट मैटर. आई हिते ओवर करना सी. इते बंद करना सी. एंड मैं की भी गाल जेका है ध्यान में रखनी है ताके वो यो है द इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क या कोटेशन मार्क के नाला जाए. ये याद रखना ताके जेको फुल स्टॉप है क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है आखिर में. तो इन जे पेरी यहां जेका है दीदा थी बाद में जो कोटेशन मार्क है. अगर इनके ये करे लिखना थी तो ये रॉन्ग थी. मतलब पेरी कोटेशन मार्क बंद कई थी को कामा नहीं फुल स्टॉप नहीं छे थी तो रॉन्ग थी. तो इनके राइट ये लिखना थी पेरी कोटेशन मार्क जे फुल स्टॉप नहीं थी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं थी या क्वेश्चन मार्क नहीं थी आखिर में. द स्पेस मार्क्स या कोटेशन मार्क वो किथे इस्तेमाल थींदियूं आहिनि कंहिंजा एग्जैक्ट वर्ड समझो था हुनजा हूबहू अल्फाज हुनजा हूबहू अल्फाज जेके आहिनि ॻोल्हिया वञनि त उन यूनिट नंबर 2 अ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज. हिन में तव्हां ॾिसो त कसीर तइदाद में राइटर कोटेशन मार्क जो इस्तेमाल कयो आहे.